Assalamu alaikum, class 7. How are you? Dear students, welcome to the lecture of SST. As you all know that we have completed your chapter number 7, that is about the transport and communication, and we did the first two questions in class. So today we are going to do the question number 4 and 5 of this comprehension exercise in this lecture. So I'll be guiding you just like I do in class, and you have to write the answers on your own. I'll be giving you points. Okay. So the question number 4 is, what are the advantages and disadvantages of road transport? As you all know that we've learned about the different kinds of transport. By land transport is the road transport, and we've learned something about the railways, pipelines, air travel, and by sea travel. So this question is related to by land transport. That is on your page number 34. So let us start doing it. The question is about the advantages and disadvantages of road transport. Okay, so you will be writing one or two introductory line about the road transport. By land transport, that is from the first three lines of your topic, that it is the oldest mean of transportation. It ranges from simple roads to giant motorways, and road transport is the lifeline of a society. So these are the introductory lines. You can write something on your own also. So the next paragraph, the second paragraph, is related to the advantages of the road transport, but I've jotted down some points for you. So the first point that I think is the main advantage of the road transport is that it is a quick mean of transportation. So you will have to write this heading and then write some lines about the topic on your own. So this is the quickest mean of transportation of goods as well as passengers from one place to the other, and it can be the goods can be directly transported very quickly and easily to wherever they are required to be transported. Now come to the second point, that is flexibility of the route. The road transport is the most flexible way of transportation when we compare it with the trains and buses and air travel. Airports are required for air travel. Train stations are required first by train travel, the railway travels, and buses are to be going out and coming in from the bus terminals. Whereas the motor vehicles that are private motor vehicles, that they are very flexible. You can go from your home anywhere, wherever you want to go. You don't have to go to the stations or the terminals. Direct transportation is very easy and flexible. Now come to the third point, without any fixed schedule. Now we are again going to compare this point of the road transport with that of the train travel and by air travel. That you, whenever you want to go anywhere with the trains or the buses or the aeroplanes, you have to follow the schedule. The fourth point is door-to-door transportation of goods and services. So this point is related to a very effective mean of transportation of goods, like the online deliveries nowadays. आपने सबने देखा होगा, आप डिलीवरी के लिए आप ऑर्डर करते हैं किसी तरह का भी, जो आप फूड पांडा या कोई भी चीज़ के थ्रू ऑर्डर करते हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी टर्मिनल पर किसी स्टेशन पर आपको होम पे डिलीवरी हो जाती है, आपकी डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल होती है। रोड ट्रांसपोर्टेशन का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अदरवाइज जो आप बाय एयर या बाय ट्रेन कोई कार्गोज वगैरह करवाते हैं तो आपको स्टेशन से जाकर पिक करना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में दिस इज़ अ वेरी बिग फैसिलिटी टू थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रांसपोर्टेड at your doorstep. Now come to the fifth point, that is mobile advertisement of the products. आजकल आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि जी रिक्शास के ऊपर और बसेस के ऊपर बड़े बड़े पेंटेड एडवर्टिजमेंट्स होते हैं. So it is a mean, road transportation is also a mean of mobile advertisement of different products. उनकी information वगैरह उनके ऊपर दी हुई होती है. It is a free sort of an advertisement जो आप चलते फिरते पढ़ भी सकते हैं और different products की information ले सकते हैं. So this is also an advantage of the road transportation nowadays. Now come to the disadvantages. The disadvantages of road transport.
So road blocks, traffic blockage जो आजकल हो रहे हैं, this is because of a large number of vehicles on the roads nowadays. So in the peak hours, we have road blockages and traffic breakdowns, because of which a lot of people get delayed from their assignments and from the place where they want to reach. So this is a disadvantage. Now come to the second, that is limited space in the vehicles. This is when we compare it with the by ship transportation of goods, or the traveling of goods from railway or the buses or the big vehicles or by air travel. So there is a limited space for people as well as for goods in by road travel. बाय एयर के ट्रैवल में बहुत कार्गो सर्विस और गुड्स और सर्विसेज और पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है, रेल्स में भी, कैरेज ट्रेन्स में भी, वेयर एज जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होते हैं कंटेनर्स ट्रक्स या इनमें थोड़ी स्पेस होती है. The next point is it is not useful for overseas and international travels. As you all know कि overseas and international travels के लिए by road transportation बहुत uncomfortable और जो है ना possible नहीं होती बहुत सी जगहों पर. तो ship के through या एयर के थ्रू या रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है ज़्यादातर चीज़ों की भी और लोगों की भी ट्रांसपोर्टेशन. High rate of accidents, so it's a big disadvantage that we hear about a lot of road accidents nowadays because of the rush hours and the hustle on the roads and the people not following proper traffic road जो rules होते हैं उनको follow नहीं कर रहे होते लोग. So next is the environmental issues. These vehicles, like motor vehicles, cars, buses, they emit fumes and smoke into the air, which is environmentally very bad. It is releasing carbon dioxide in the air, which is harmful for us, all of us. When we compare it with the trains and with the air travel and the ships, it is much more. The road transport is much more environmentally non-friendly. ओके जी, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, इनको आपने एक एक लाइन दो दो लाइन से एक्सप्लेन कर लेना है. Now come to the next question, that is question number 5. Can you suggest any problems there might be with the pipelines as a mean of transport? Pipeline mean of transport को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, that is on page number 36 of your book. So when we start the question, when we start solving the question, you have to write introductory lines. As you all know, it is a means of transportation which is mostly used for moving oil, gas and petroleum within a limited region, within a limited area. Pipelines बिछाई जाती हैं कंक्रीट स्टील की आजकल, तो उनके थ्रू इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, लाइक ऑयल जा रही होती है, गैस पाइपलाइंस के थ्रू जाती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाती हैं, रिफाइनरी तक जाती हैं, या फिर रिफाइनरी से आगे डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक जाती हैं. So let us look at the disadvantages or the problems that might be with the pipeline mean of transport. The first point that I have jotted down is that it is expensive to build. These pipelines are basically made up, and this is the third line of your book content, okay? Pipelines ka. These are made with the steel, concrete, and even plastic nowadays. So these are very expensive to build when we compare it with other means of transportation. Okay. Now come to the second point, that is fear of breakage and leakage. When you look at the end of the book content of your pipelines topic, you can very easily see that in case of any breakage or leakage of these pipelines, it would be very impossible to control the flow of the material or the mineral that is going through from this pipeline, and there will be a huge loss of the mineral or material before the leakage is identified and corrected and the supply is stopped. The next point is that difficult security arrangements. जो owners of the pipelines होते हैं, normally these are government owned, ठीक है ना, public property होती हैं, तो it is very difficult to provide security arrangements for the pipelines from any terrorist attacks or any breakages or leakages. उनकी security के लिए 24-hour services बहुत मुश्किल हो जाती हैं. Pipelines बहुत लंबी होती हैं. These are long pipelines going from one place to the other, to the filtration plants and anywhere else. So it's very hard to secure the whole of the pipeline.
एंड द फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, लाइक बिल्कुल एक लिमिट के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है मिनरल की. इफ द पाइपलाइन इज 2 meters वाइड तो उसमें उतना ही मिनरल जा सकता है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर आपको ज़्यादा मिनरल अवेलेबिलिटी चाहिए कहीं पर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इस पाइपलाइन से आप स्पीड से ज़्यादा मटेरियल लेके जा सकेंगे. एक लिमिटेड अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पर. सो अगर ज़्यादा अमाउंट कहीं पे चाहिए आपको मिनरल की तो आपको वेट करना पड़ता है. इट्स नॉट पॉसिबल. वेयर एज एयर ट्रैवल में और रेलवेज में हम मिनरल की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि कभी ज़्यादा ले गए और कभी कम. ओके. So now come to the next point, that is transportation of to the fixed points. ओके जी, ये तो बहुत इजी सा पॉइंट है जो आपको सबको समझ भी आ रहा होगा. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज पॉसिबल इन अ पाइपलाइन. इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पाइपलाइन को एक जगह से उठा के आप कहीं और ले जाएं. द मिनरल कैन ओनली बी ट्रांसपोर्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर वेयर इट हैज़ बीन बिल्ट. जहाँ के लिए बनाया गया बस वहीं तक जाएगा मिनरल. उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते. वेयर एज एयर ट्रैवल में, रेलवेज में और रोड ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे भी आप कंटेनर को लेके जा सकते हैं इधर उधर. ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड. सो आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है बहुत अच्छी तरह से. एंड दिस इज योर होम टास्क ऑल्सो. यू हैव टू डू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. दिस विल कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल बी डूइंग द वर्कशीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज.